Hello everyone, welcome to GateHub Online. Today we are going to discuss about the next chapter on surveying, that is contouring. Okay, so if you are writing the Public Service Commission exam and AE junior engineering level exams, okay, then this chapter is very important. Okay, but in the case of GATE exam it is not so important. Okay, because this chapter is fully theoretical based. Okay, there are no numericals oriented questions may be asking from the contouring. Okay, so it is very important. Once you will cover the all the theory section, then you will be able to answer all the questions related to this chapter. Okay, so before we discuss about contouring, what is contouring, you should know what is contour. Okay, तो इससे पहले कि आप लोग जानेंगे कि कंटूरिंग किसको बोलते हैं, उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कंटूर क्या होता है. ठीक है, सो लेट्स सी हियर डेफिनेशन. कंटूर is an imaginary line joining the points of equal elevation. कंटूर लाइन क्या होता है कि एक ऐसा लाइन है जो इक्वल एलिवेशन वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करता है. ठीक है, आप इस फिगर से समझिए. लेट अस सी हियर one point, okay, and here one point, here one point, okay, and here one point. A line joining these all the points, okay, and these points having all points are having same RL, that are 190. So the line which are joining these points having equal elevation, that are known as the contour line. Okay, so you have clear what is contour. Now the process of joining these all the line and finding the this line, all these process are called contouring, right? You have clear what is contouring. Okay, now see, it is also a level surface intersecting the earth surface, right? ये क्या होता है, ये क्या है, एक लेवल सरफेस है जो अर्थ सरफेस को इंटरसेक्ट करता है. ठीक है, क्लियर है. मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि लेवल लाइन क्या होता है. ठीक है, सो द लेवल लाइन इज अ कर्व्ड सरफेस एंड इट इज नथिंग बट you can take an example of the still water in the pond or lake, that are the level surface, right? क्लियर है कि लेवल सरफेस किसको बोलते हैं. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस regarding the contouring is contour interval, that is CI. तो यहाँ से देखना है कि कंटूर इंटरवल्स किसको बोलते हैं, राइट. इट इज द डिफरेंस इन RL of the adjacent contour, right? From the definition you can see the RL difference means, suppose that this is the one contour line, I have naming it is A, right, and it is another contour line, I am naming it as B, okay, and it is another contour line, I am naming it as C. So adjacent contour, that is A and C are adjacent contour, A and B are adjacent contour. So the RL difference between these adjacent contours are known as the contour interval. Just like you can see, the RL of contour line A is 180 and RL of contour line B is 190. So the difference in these two contours are 10. Then this 10 is called as the contour interval between contour A and contour B, right? So you have clear now what is contour interval. So now contour interval is a constant for a given map. मीन्स देखिए, अगर कोई एक मैप प्रिपेयर किया गया है तो उस मैप के लिए क्या होता है, कंटूर इंटरवल कांस्टेंट होता है, उसमें वेरी नहीं करता सिर्फ. ओके, इट इज नॉट चेंजेस फॉर अ पर्टिकुलर मैप, राइट. नाउ नेक्स्ट इज कंटूर इंटरवल डिपेंड्स ऑन the 3 points. Okay, there are 3 features. First one, nature of the ground. Okay, if the ground is flat, a small contour interval. Okay, and if the ground is undulated, large contour interval, right? मीन्स ग्राउंड के फीचर पर हमारा क्या है, कंटूर इंटरवल डिपेंड करता है. अगर ग्राउंड हमारा फ्लैट है तो क्या होगा, कंटूर इंटरवल स्मॉल होगा. एंड इफ ग्राउंड जो है इंड्यूलेटेड रहेगा तो हमारा कंटूर इंटरवल क्या होगा, लार्ज होगा. मीन्स एडजेसेंट जो
कंटूर्स लाइन है उसके बीच का RL डिफरेंस हमारा ज़्यादा हो जाएगा इंडुलेटेड ग्राउंड पे, राइट। नाउ सेकेंड इम्पोर्टेंट thing is scale of a map is directly proportional to the 1 upon contour interval. Means if there are one map, right, so the scale of that map is inversely proportional to the contour interval, right. Now third, purpose and extent of a survey, right, means what type of survey you have done, okay, that are also points that in that the contour interval is depend, okay. So these 3 points are very important for 1 marks objective, right. So you should remember it. Now the next important thing is regarding the contouring is horizontal equivalent, right. Now you have clear about the contour interval. Now see horizontal equivalent. What is horizontal equivalent? It is the horizontal distance between any 2 points considered along the adjacent contour, right. Let us see. I have already named it. It is a contour line A, it is a contour line B, and it is a contour line C, right. So what is contour interval? The RL difference between the adjacent contour. But in the case of horizontal equivalent, the horizontal distance, just like this, means what is the distance between A and B, the distance that are called as a horizontal equivalent, horizontal distance, right, not vertical distance. If the vertical distance, then it is a contour interval, but in the case of horizontal distance, if you measure between the two adjacent contour, then it is known as the horizontal equivalent of the contour, okay. Now for a steeper ground, horizontal equivalent is less, or for the flatter ground, horizontal equivalent is more. Means if our ground is just like this, means ऐसा रहेगा, ज़्यादा स्टीपर रहेगा, तो हमारा क्या होगा, एक कंटूर यहाँ पे हो जाएगा, एक कंटूर यहाँ पे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट होगा वो कम हो जाएगा. Similarly, in the case of flatter ground, just like see, one contour line is passing through this point and another contour line is passing through this point. So this horizontal equivalent will be the more, right? Now you have clear what is contour, horizontal equivalent of contour, right? Now see, next point is contour gradient, right? I have already discussed the regarding the gradient in the highway lectures, okay. I have told you what is the gradient. I have told you that if there is a road, okay, something like that, and okay, so the longitudinal slope means along the direction of the traffic, what is the slope, that slope are known as the gradient. But in the case of contour, what is, it is a line lying on the earth's surface and maintains a constant inclination with horizontal, right. कोई भी हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस में क्या है, एक इंक्लिनेशन है, मीन्स ढलान है या ग्रेडियंट है. अगर ये जो हमारा ग्रेडियंट है ये हमारा कांस्टेंट रहा विद द हॉरिजॉन्टल, मीन्स ये अगर ये थीटा हमारा इस पॉइंट पे और कोई भी पॉइंट अगर ले लें, तो at every point this theta means inclination will be the constant, then it is known as the contour gradient, then this line will be called as a contour gradient. Now contour gradient is equal to the contour interval divided by horizontal equivalent, right. Just see here, suppose that this is the one contour, okay, and this is the another contour, right. What is the horizontal equivalent? The vertical distance between two adjacent contour, right, and horizontal equivalent, the horizontal distance between the two contours, means just like something like this. So if this theta will be the constant, then we can say this contour is a contour gradient, right. Clear. Now horizontal equivalent or horizontal length, that are contour interval by contour gradient, right. Clear. Now from here we can calculate the radius of an arc required to obtain proposed route path, right. मीन्स कितना आर्क का रेडियस हम लोग को रिक्वायर्ड होगा प्रोपोज्ड रूट ऑफ पाथ फाइंड करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं.
horizontal equivalent on the ground is equal to horizontal equivalent by scale on the plan, right? So you have clear what is contour gradient. Now the next thing is method of tracing of contouring. Contours means how to trace a contour lines on a field. Okay, so what are the methods we adopt? So first method is indirect method. In this indirect method we adopt by a square, by grid, by tachometry we can find out the contour lines. Okay, and in the case of direct method we can find out the contours line using by spot level and by radial lines. Okay, how to find or how to trace I am not discussing because it is a very tedious method and it is not at all required for you. Okay, and it will not ask in the any of the examination, right? Now here see some important points regarding the method of tracing of contour. See, direct method can also be used for a small area with high accuracy. Means डायरेक्ट मेथड को हम लोग क्या स्मॉल एरिया में यूज कर सकते हैं हाई एक्यूरेसी के साथ. But whereas indirect method is used for large area which with less accuracy. Okay, here you should correct it. It is with, right? Clear? So indirect method हम लोग क्या large area में use कर सकते हैं with less accuracy. Now indirect method is most suitable for hilly areas. हम लोग indirect method कहाँ पे ज़्यादा suitable होता है? Hilly area में, पहाड़ी इलाके में हम लोग का ये ज़्यादा suitable होता है indirect method, right? Clear है? यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा कंटूरिंग के रिगार्डिंग में. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूरिंग, राइट? सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर any competitive examination, right? Even though for GATE and IES and ESC exam, these points are very very important. Okay, since the chapter contouring is not at all most required for GATE and ESC, but these 7 points are very very important regarding the if you are writing GATE or ESC, right? And apart from that, it is also most important for Public Service Commission exam and junior engineering examinations, right? So see here, you should watch it carefully and listen it. Two contours of different elevation will not cross each other except in the case of overhanging cliff. Okay, means क्या है? Suppose that this is the one contour and this is the another contour. So these two contours will never cross each other. Okay, only in the case of overhanging cliffs. Means suppose that I have one overhanging cliff, something like that. Okay, if this type of overhanging cliff is there, then only two contours can cross each other. Just like see, one contour, another contour will cross only in the case of this type of overhanging cliff, right? In any other cases, there is not at all possible to cross two contours line at a point. Okay, clear? Now, second important point is contour lines of different elevation will unite and form a single line in a case of vertical cliff. Okay, if we have one vertical cliff something like that, then two contours, suppose that one contour and one other contour will meet and unite and form a single contour. Okay, two or more than any contours can unite and form it a single contour line. Okay, it will not cross each other. Okay, it will overlap just like this is the contour A, right? And this is the contour B. It will overlap each other, right? In the case of vertical cliff, okay, just like see here, just like here, if there is a vertical cliff, then only it will unite and form a single contour line, right? Now third point is if contour lines are close together indicate steep slope, and if contours line are
डिपार्ट फ्रॉम ईच अदर रिप्रेजेंट्स अ जेंटल स्लोप, राइट। देखिए क्या है, सपोज इट ये हमारा एक कंटूर है, ये हमारा एक कंटूर है, ठीक है। अगर ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मीन्स हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट यू कैन से, इफ इट इज लेस, ओके, अगर ये कम रहा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या स्टीप स्लोप होगा, मीन्स समथिंग लाइक दिस टाइप ऑफ स्लोप। यहाँ पे जो हमारा स्लोप होगा ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। बट अगर ये हमारा एक कंटूर लाइन है और एक ये है, यहाँ दोनों के बीच का अगर जो डिफरेंस है ज़्यादा हो गया तो हमारा क्या होगा, जेंटल स्लोप होगा, मीन्स समथिंग लाइक दैट, ओके। यहाँ से जो ये स्लोप होगा ये ऐसा कुछ हो जाएगा, क्लियर है क्या होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज contour line will cross a watershed or ridge line at right angle and form U-shaped curve, right? Means suppose let's see this is the watershed or ridge line, okay। अगर कोई भी watershed और ridge line को हमारा क्या करता है, ये हमारा क्या है, कंटूर लाइन, ठीक है। कंटूर लाइन इसे क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे क्या है, ये हमेशा 90 डिग्री पे क्रॉस करेगा कोई भी रीज लाइन को, राइट। और ये हमारे पास क्या कुछ इस टाइप से यू टाइप से शेप में फॉर्म करेगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से, क्लियर है। ये हमारा कंटूर का प्रॉपर्टीज है, ठीक है, क्लियर। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टीज, कंटूर लाइन क्रॉस अ वैली लाइन एट राइट एंगल एंड फॉर्म वी शेप, राइट। सपोज दैट दिस इज द वैली लाइन, one contour line is cross something like this, okay। So here the angle which is crossing the वैली लाइन एट 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे आप लोग को याद ये रखना है कि वाटरशेड और रिज लाइन और वैली लाइन, वाटरशेड और रिज लाइन और वैली लाइन तीनों लाइन को जब भी हमारा कंटूर लाइन क्रॉस करता है कितना डिग्री पे क्रॉस करता है, 90 डिग्री पे, ठीक है, क्लियर है। और कौन सा शेप फॉर्म करता है, यहाँ से याद रखना है वी फॉर वैली, वी फॉर वी शेप। वैली लाइन को वी शेप में क्रॉस करता है, याद रखने का ट्रिक है यहाँ पे हमारे पास, V for valley, V for V shape, right? And another is ridge line का U shape. ridge line में जो हमारा क्रॉस करेगा उसमें क्या U shape फॉर्म करेगा, ये आपको याद रखना है, it is most important, right? Now next, sixth properties, in a closed contour, if higher values of a RL are inside indicates hill and if lesser value are RLs are inside indicate ponds, okay। Suppose that we have a closed contour something like that, okay, this type of closed contour। अगर जो हमारा सेंटर का जो RL है वो ज़्यादा होगा, suppose that this is the 90, this is the 80 and this is the 70, okay। अगर ये हमारा सेंटर का जो RL है ये ज़्यादा हुआ तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हिल को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स कुछ इस टाइप से पहाड़ को। अगर ये हमारे पास यहाँ पे कम हो जाएगा, सपोज दैट ये हमारा सेंटर का 70, ये बीच का 80 और इधर का 90, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये हमको ये पॉन्ड और वैली को रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे हमारा पॉन्ड होगा, मीन्स वाटर होगा या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको कि किस कब हमारा पॉन्ड होगा और कब हिल होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कंटूर lines closed upon itself not necessary within a portion of the contour map, right? Suppose that this is the one contour map, right? I am drawing a contour line, so it is not necessary that this contour line will close up within this map, okay, it is not necessary, right? This is the seventh point. Now next topic in this contouring is uses of contour, means कहाँ पे हम लोग contour का use करते हैं। Now so first use of contour is map section can be drawn from contour map, with the help of contour map we can prepare a map section, right? Second, intervisibility between two points can be determined, okay, means दो point के बीच में हमारा means visibility है या नहीं है उसको determine कर सकते हैं। Now next,
A line with a required gradient can be identified. मीन्स कोई भी लाइन का रिक्वायर्ड ग्रेडियंट पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सुटेबल एंड इकोनॉमिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स कैन बी प्रपोज्ड, ओके। मीन्स कंटूर मैप से हम लोग क्या, कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जो हमारा सुटेबल होगा, इकोनॉमिकल होगा, उसको हम लोग प्रपोज कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट जो इसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको मैं स्टार मार्क करना चाहूँगा, क्या है, विद द हेल्प ऑफ कंटूर वी कैन फाइंड आउट reservoir capacity, volume of earthwork excavation, and catchment area can be estimated, right? Means contour map का help से हम लोग क्या, reservoir का capacity, volume of earthwork excavation, and catchment area can be estimated, right? Clear? ये हमारा हो गया क्या, कंटूरिंग चैप्टर, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ओके। और आपको अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।